Hello, welcome students. This is part 2 of chapter number 2, acids, bases and salt. In the previous video, we did the reaction of acids and bases with metals, the reaction of acid and bases with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Now, here we will be discussing how acid and bases react with one another. So you have an activity in which you have to take 2 ml of dilute sodium hydroxide solution and you have to add few drops of phenolphthalein indicators. Okay, sodium hydroxide is basic solution. When you put phenolphthalein indicator in a basic solution, the color of the solution will turn into pink. So what is the color of the solution? The color of the solution will be pink. Now you have to add HCl solution to the above solution drop by drop. You are putting NaOH was basic. You are putting a acidic solution inside it. Is there any change in the color of the mixture? Yes, the pink color of the solution will again change into colorless. What does the color of the phenolphthalein change after addition of an acid? Because you have taken base. Okay, now you are putting acid inside it. Now what happens? The amount of OH ions in a basic solution and the amount of hydrogen ion in acidic solution neutralizes the reaction, and this kind of reaction in which an acid is neutralized with the help of a base or a base is neutralized with the help of an acid is known as a neutralization reaction. In the above activity, you will get the reaction as NaOH in the aqueous form plus HCl, that also in the aqueous form, react and give the product NaCl in the aqueous form and water in the liquid form. So this kind of reaction that takes place between acid and base to give salt and water is known as neutralization reaction. Acid plus base gives salt plus water. Next is a reaction of a metal oxide with acid. You have to take small amount of copper oxide, that is CuO, in a beaker and add HCl inside it while stirring. And you have to note the color change in the solution. Now you will note that the change of the solution will become blue-green and the copper oxide dissolves. The copper oxide in the beaker will dissolve in the solution. Now the blue-green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride, that is CuCl2. The general reaction that takes place between a metal oxide and acid is written as metal oxide plus any acid. You will get salt plus water. See, all this symbolic general reaction, if you will learn it, it will be easier for you to carry out any of the reactions, because only you have to know when you are reacting a metal oxide with acid, it is natural, it is 100% sure that you will get salt and water only. Now, since the metal oxide we have used above, that is CuO, react with acid to give salt and water, this reaction is similar with the base and acid. Base और acid को भी हम treat करते, react करते, तो हमको मिलता है salt और water. मेटल ऑक्साइड और एसिड को भी रिएक्ट करते तो भी मिलता है सॉल्ट और वाटर. So we can say that here the metal oxide will have the properties of an base. So this metal oxides are said to be basic oxides. Same way, reaction of a non-metallic oxide with water. Calcium hydroxide, which is a base, that is CaOH twice, reacts with carbon dioxide to produce salt and water. Okay, similarly, we say that base और acid react किया तो salt और water मिला. इधर हमने CO2 और calcium hydroxide लिया. Calcium hydroxide is a base. तो the CO2 will act here as a non-metallic oxide, which is acidic in nature. Next is, what do all acids and all bases have in common? जैसे मैंने बताया, acids में होता है hydrogen ion, बेस में होता है OH आयन. अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सेम क्या है? ओके, फॉर दिस यू हैव डन एन एक्टिविटी
we have to take solutions of glucose, alcohol and hydrochloric acid. Glucose is a carbohydrate, alcohol एक अलग ही group है, और hydrochloric acid it is an acid, and sulfuric acid it is also an acid. You have to fix 2 nails on the cork that is put inside this beaker that is containing glucose. One by one we have to take the solution. So पहले glucose, then alcohol, then hydrochloric acid, then sulfuric acid. You have to take 100 ml of all the solutions in the beaker. You have to connect we have to take a 100 ml beaker. We can take as much solution we want. Then we have to connect the nails with the help of wires to a 6-volt battery through a bulb and a switch. Okay, now as soon as you start the current, जैसे ही बैटरी ऑन करोगे, the current supply will start. You will observe some changes in the lighting of the bulb. ठीक है, ग्लूकोज डालोगे तो जो लाइटिंग ऑफ द बल्ब होगा वो दिखेगा नहीं दिखेगा, अल्कोहल होगा तो दिखेगा नहीं दिखेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो दिखेगा नहीं दिखेगा, बल्ब ग्लो होगा नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा बल्ब ग्लो होगा नहीं होगा, वो हमको ऑब्जर्व करना है इन दिस एक्टिविटी. नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब विल ग्लो इन केस ऑफ एन एसिड. दैट मीन्स HCl और H2SO4 डालोगे बीकर में और बैटरी ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, द बल्ब विल ग्लो. बट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस में हमको बल्ब ग्लो होता हुआ नहीं दिखेगा. बट इन ग्लूकोज इट इज़ रिटन हियर दैट नहीं होगा, बट थोड़ा ग्लो होता है इन केस ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज ऑल्सो हैज़ C6H12O6, उसमें भी हाइड्रोजन आयन है, तो थोड़ा ग्लो करेगा लेकिन ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा. इट डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन आयन्स रिलीज ड्यू टू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक current. Okay, now this glowing of the bulb indicates that the flow of electric current through a solution. The electric current is carried out through the solution by the ions, that is the hydrogen ion. Here the hydrogen ion is known as a cation. That suggests the acid produce hydrogen ions in a solution, which is responsible for the acidic properties of the solution. Now what happens to an acid or a base in a water solution? Okay, do acids produce ions only in aqueous solution? क्या सिर्फ एसिड आयन जो हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन में ही होता है या कोई भी सॉल्यूशन में हो सकता है? Okay, now here also you have to do an experiment. In this experiment you have to take 1 gram of solid NaCl in a dry test tube. You have to set up the experiment in such a way that on the top of this test tube you have to attach a delivery tube with a cork. You have to add some sulfuric acid to the test tube. You have to observe the gas coming out of the delivery tube. The gas, you have to test that gas coming out of the delivery tube. You have to check whether it is acidic or basic by placing a piece of red litmus paper, blue litmus paper in front of it. In which case does the litmus paper change the color? Okay, it is clear that the litmus paper will change the color when the solution is, the red litmus paper will turn into blue. If it is basic, the blue litmus paper will turn red if it is acidic. Okay, so in the above experiment it is clear that the HCl, the hydrogen ions in the HCl are produced due to the presence of water. If water is not present, okay, water is H2O. If H2O is hydrogen ion and OH ions है ना, H2O जब अलग अलग होता है तो it is converted into hydrogen ion and OH ion. OH ion is negative, hydrogen ion is positive. तो hydrogen ion और OH ion जो होता है उसमें molecules होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर्म HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. दैट इज HCl will only react with water when hydrogen ion and OH ions are released. Now here OH ions, hydrogen ions नहीं होते. Here it is in the form of H3O. Why it is H3O?
बिकॉज जो H2O है उसमें भी हाइड्रोजन आयन और OH आयन है ना। तो वो दोनों के साथ रिएक्ट करके जब हाइड्रोजन आयन मिक्स होता है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H3O. दिस H3O इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस, क्योंकि HCl का जो Cl है वो भी Cl माइनस में अलग हो जाता है, और हाइड्रोजन आयन HCl में जो हाइड्रोजन आयन है इट विल बी कन्वर्टेड, इट विल बी मिक्सड विथ हाइड्रोजन एंड OH आयन ऑफ द water molecule and it will convert into H3O. Okay, you can see it down. H plus H2O gives H3O ion. It is also positive ion. Positive ion are known as the cations. Now we see that the acid gives hydronium ion or hydrogen ion. Now let us see what happens when a base is dissolved in water. Now when a base is dissolved in water, it will release the metal, that is Na and OH, and here we are taking the example of NaOH, so it will release Na plus and OH minus. Now in case of KOH, okay, KOH को अगर पानी में मिक्स करेंगे, KOH इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिक्स करेंगे तो you will get K plus and OH minus ion. MgOH ट्वाइस को एसिड में मिक्स कर और वाटर में मिक्स करेंगे, you will get Mg2 plus ion and 2 OH ions. This kinds of bases which releases hydroxide ions in water and means that it is soluble in water. This kind of bases are known as alkalis. ठीक है, ऐसे bases जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं in water and are soluble in water are known as alkalis. Okay, now all the bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolves in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste it, otherwise it will harm your tongue. Your sensory tongue is a sensory organ ना, so वो जो सेंस करना तो olfactory nerves होते हैं, उसमें olfactory receptors होते हैं, वो खराब हो सकते हैं. Now we know that acids generate hydrogen ion and bases generate OH ion. So here also we can undergo a neutralization reaction, means acid और base react हुआ, salt और water मिला. acid का formula है H होता है acid में हाइड्रोजन आयन, X is a compound, base में होता है OH तो होता ही है, basic में OH होता है, और M is a compound. Now when you react it, the X and M will combine together and it will form MX. Now why I have written MX, why haven't I written XM? क्योंकि हमेशा जो भी कंपाउंड होता है पॉजिटिव आयन पहले आता है, नेगेटिव आयन बाद में आता है, पीछे नेगेटिव आयन आता है. तो यहाँ पे जो HX है, H इज पॉजिटिव, X इज नेगेटिव, M इज पॉजिटिव, OH इज नेगेटिव. तो पहले पॉजिटिव आएगा, इसीलिए पहले M फिर आएगा X. ओके, सो हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन combines together to form water molecules. The presence of process of dissolving an acid और base को जब तुम पानी में dissolve करते हो, so it will release a huge amount of heat. You can feel it when you touch the beaker. ठीक है, तो this kind of reactions in which heat energy is released is known as, remember chapter number 1, rewind to chapter number 1, heat energy is released. It is known as exothermic reaction. So care must be taken when you are pouring this water into a concentrated acidic solution. Generally, it is a wrong method to pour water in an acid. Every time you have to first take water, inside that water you have to pour acidic solution and you have to continuously stir it. Otherwise, the amount of heat released very so high, okay, the latent heat will be so high that it will make the beaker or the glass to burst, and you can see the cracks in the test tube, beaker or anything. Okay, so mixing on acid or base with water results in the decrease in the concentration of ions per unit volume. Now when we are decreasing the amount of the concentration of hydrogen ion and OH ion of a solution, it is known as a diluted solution. Next is strong acid. How strong are acid and bases? When I was saying you about acid and bases, I said that there are different kinds of acids. Strong acid, weak acids, concentrated acids, strong base, weak base.
Okay, so here we will discuss about strong acids and strong bases, weak acids and weak bases. Here you can see that third paragraph, the third paragraph, not first, second, and the third paragraph. A scale, like we have a scale for measuring the length, same way a scale is there to measure the hydrogen ion concentration in a solution. This scale is known as a pH scale. The P in the pH scale stands for potence, that is in German language, means power. On the pH scale, we can measure pH from ranging 0 to 14. 0 is very acidic and 14 is very alkaline. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or the basic nature of a solution. Higher the hydronium ion, higher the hydrogen ion concentration, the lower is the pH value. ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सपोज बहुत सारा हाइड्रोजन आयन है, तो उसका पीएच होगा 7 या 6 के पास. अगर बहुत कम हाइड्रोजन आयन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम है, तो वो ज़्यादा एसिडिक, तो वो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, सो इट विल बी मोर एसिडिक. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम है, तो इट विल बी लेस एसिडिक, दैट इज इट विल बी बेसिक. The pH of a solution the pH of a neutral solution is 7. Neutral मतलब it has equal amount of hydrogen and OH ion concentration. उसको कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन. जैसे कि वाटर, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, आरओ का वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसका पीएच होता है 7. यू वुड हैव सीन कि जो आरओ मैन आते हैं रिपेयर करने के लिए, उनके पास एक पीएच वैल्यू टेस्ट करने का एक मशीन होता है, तो उसमें वो डिप करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हमारा आरओ मशीन सही है क्योंकि पीएच इसका मेंटेन्ड है, दैट इज 7. एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, पीएच वैल्यू बढ़ता है मतलब 7 to 14 चला जाता है, इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन द OH आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, 7 से 14 तक OH आयन, जैसे जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 होता है तो OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. 7 से 6 आते हैं, 6 से 5, 4, 3, 2, 1, बैकवर्ड में 1 तक जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. One such paper is shown in the figure. This is a pH indicator paper. In this strip you have different colors. 14 तक जो pH रेंज होता है 0 to 14, अलग अलग कलर्स होते हैं. उसके ऊपर एक शेड कार्ड जैसा होता है जिससे तुमको पता चलता है कि वो एसिड है या बेसिक है. कलर के ऊपर तुम अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करोगे, सो अकॉर्डिंग टू द कलर यू कैन चेक वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक. सो इन दिस फिगर 2.6 यू कैन सी दैट 0 के वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. जैसे जैसे 7 के वहाँ पहुँच रहे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. बट 7 to 14 जनरली बेसिक माना जाता है, लेकिन बेसिक साइड में भी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन कंपैरेटिवली कम है. और जैसे जैसे 14 तक जाता है तो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. ओके, दिस इज़ द पीएच स्ट्रिप. ठीक है, पीएच स्ट्रिप में ऐसा इंडिकेटर होता है. तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक कलर में चला जाता है, जो बेसिक होता है वो 7 to 14 के बीच में आ जाता है. द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, OH आयन. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, acids that give rise to more hydrogen ions are said to be strong acid, and acid that give less hydrogen ion are said to be weak acid. Okay, now स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और वीक सॉल्ट करेंगे. दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है वो वीक एसिड, जिसमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है वो वीक बेस. नाउ